Now children, today let's start with chapter number 10, sound. So in this chapter we will study about sound. So different objects produce different kinds of sound. कुछ sound कैसी होती है, pleasant होती है, and some are unpleasant. और जो sound होती है वो किसमें help करती है? In communicating with each other. Suppose if there is no sound in the world, what world would be? So imagination tells about the importance of sound. So we will study about how sound is produced and many other things about sound. So what causes sound? Now here activity is given. You can see here, take a black blade or a plastic ruler and insert one end of the blade to any cardboard. If you taking ruler, then put a brick at one end of the ruler facing on the edge of the table. आप देखोगे जो आपका ब्लेड है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है. ऐसे आपको रबर बैंड लेना है, उसको टाई करना है विद वन एंड ऑफ अ नेल एंड विद योर फिंगर, and with a finger of your free hand plug the rubber band. You will see the rubber band starts vibrating और वो साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे आप स्टॉप करोगे वाइब्रेशन को, इट ऑल्सो स्टॉप मेकिंग साउंड्स. और वो क्या प्रोड्यूस करता है? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ. नाउ यू हैव टू टेक अ टेनिस बॉल. आपको टेनिस बॉल लेनी है, उसको हैंग करना विद स्टेन. नाउ स्ट्राइक विद अ टर्निंग फॉर्क. ठीक है, व्हाट हैपेंस? यू विल सी जो बॉल है वो मूव करना स्टार्ट करेगी in to and fro, and motion of ball due to vibration is emitted by fork. So every source of sound, what it produce vibration, right? If you take a turning fork in a jar full of water और strike करोगे with rubber band, आप देखोगे ripples produce होते हैं, right? Now we conclude from our activities that main source of sound is always vibration. जो main source of sound होती है वो हमेशा क्या होती है? Vibration, right? Now various types of, there are generally two: musical sound and noise, audible and inaudible. So let's study about musical sound. Musical sound क्या होती है? प्लीजेंट इफेक्ट देती है हमारे ईयर को. लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई साउंड आपको सॉन्ग से आ रही है, वो सब क्या प्लीजेंट है? म्यूजिकल साउंड है. नॉइज विच प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट, राइट? इन जैसे आपकी मोटर्स की आवाज हो गई, मशीन्स की, शाउटिंग की, लाउड स्पीकर की, वो सब क्या है? नॉइज है, अनप्लीजेंट. नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल. साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लेस देन 20 हर्ट्ज है. They are not heard by human ear. तो ये कौन सी साउंड होती है? इनऑडिबल. एंड हैविंग मोर देन, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है और वो ह्यूमन हियर नहीं कर सकता, वो क्या होती है? इनऑडिबल साउंड. एंड साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज आर हियर्ड बाय ह्यूमन. दे आर ऑडिबल, और इनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहते हैं. और ये फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस के लिए बहुत क्या होते हैं? यूजफुल होती है. Right? How does sound travels? It makes molecules of air vibrate. One molecule makes the other molecule vibrate with the same frequency. So vibration, they are transferred all around the vibrating object. It is similar to the activity in which we show the vibrating prongs, and these vibrations die after some time. The displacement of the body from its moon position, जो amplitude होगा body का, वो क्या होगा? Greater होगा, because वो क्या करेगा? ज़्यादा distance travel करेगा. So louder sound are heard at great distance. आप देखेंगे ज़्यादा साउंड हमें सुनाई देती है जब हम great distance. Why does sound differ from one another? Sound produced by drum is different from sound produced by tabla, and sound produced by violin is different from that is produced by sitar or guitar. Right? Voice of each boy or girl is different from other boy or girl. These differences are due to difference in their loudness, pitch or its frequency. Now characteristics of sound. We had loudness. When we strike the drum slowly, it produces soft sound, and when we strike it hard, what it produces? Shrill sound, right? So drum vibrates with less amplitude and produces slow soft sound, while it struck hard, it vibrates with greater amplitude. और वो क्या produce करता है? Loud and shrill sound produce करता है. So loudness depends upon the area of vibrating body. A large drum will produce louder sound than small drum. So जैसे जैसे loudness increase होगी with the increase area और decrease होगी with increase in distance. Now what is pitch? Different sounds with same loudness. So sound of drum will be more shrill than the sound of tabla. Why? Because यहाँ पे difference है. Frequency of vibration पे क्या है? Difference है. Higher the frequency of the vibrating object, more shrill is the sound. तो जो shrillness है sound, जिसको हम क्या कहते हैं? Pitch कहते हैं. It is known as pitch. Now here activity is given. You will take 2 drinking straws. Cut करोगे slanting. जब slant करेंगे, second straw को थोड़ा छोटा रखेंगे. Now listen to the sound of the whistle carefully. When you blow the whistle through a shorter straw, you will find that the sound है through the second or shorter straw, इसकी जो pitch होगी वो higher होगी. किससे? As compared to bigger one. ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है, बड़े वाले से जो pitch होगी वो ज़्यादा होगी छोटे वाले. Right?
and this is how frequency of sound increases. Now sound quality or timbre, we can distinguish between two sounds, voices of same loudness. We can identify any person from his voice in a group of people. Most vibrating जो objects होते हैं, they produce sound of different frequency. Musical instrument produce basic sound frequency जिसे हम fundamental कहते हैं, along with other frequency जिसे हम harmonies कहते हैं. Now sound need a travel. देखो sound को कोई ना कोई need travel करने के कोई mean चाहिए. So take a glass bell jar and place electric bar and connect to the battery. Complete the circuit, you will hear the bell ringing. एक ये वैक्यूम क्रिएट करता है जार में, और जो वैक्यूम होता है वो कंप्लीट करता है सर्किट ऑफ द बेल अगेन, एंड यू विल लिसन वेरी फेबल साउंड ऑफ द बेल. ग्रेजुअली व्हाट विल, जैसे आप उसको स्टॉप करोगे, जो हैमर ऑफ द बॉल है वो स्ट्राइक करना स्टार्ट करेगा. इफ यू अलाउ एयर टू कम टू द जार, व्हाट विल हैपन, यू विल एबल टू लिसन टू द साउंड. दिस प्रूव दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल विदाउट एनी मटेरियल. इट्स नीड एनी मटेरियल टू ट्रैवल. Now take a long cotton thread and attach it to the open ends of plastic glass. आपको ऐसे प्लास्टिक ग्लास अटैच करना है. एक का तरफ आपने ईयर पर रखोगे, दूसरा बोलेगा, और आपको देखेगा कि आप देखोगे होल्स में से क्या आएगी, आवाज आएगी. Now ask your friend to hold one to his ear and stand away and speak in one as you do in the mouth piece of the phone, and you will friend will listen, able to listen. आपका जो दोस्त है ना, उसको आपकी आवाज सुनाई देगी, राइट? इससे भी आपको पता चलता है कि what sound need a medium to travel. Now noise, unpleasant sound. So you have stated earlier that sound which appears unpleasant in our ear is noise. So noise is produced due to non-periodic vibration, and noise has irregular wave form. Now what is noise pollution? Noise pollution is disturbance created by unpleasant, unwanted, harsh, loud music. So noise created by machines, like in factories and industrial unit, heavy machinery is used for various function and process. ये क्या create करते हैं? Lot of noise. Noise are created by vehicle. देखो भाई, सबसे अदर सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का, वो व्हीकल्स है. आप हॉर्न ब्लो करते हैं, राइट? लाइक ट्रक, हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक, वैगन्स, बसेस, जो प्रेशर होता है हॉर्न का, ये नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. नॉन डोमेस्टिक नॉइज मतलब आप देख रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर की आ रही है, वॉशिंग मशीन की आ रही है, ये सब क्या है? म्यूजिक सिस्टम की, टीवी की, एक्सेट्रा. नाउ नेबरहुड नॉइज, लाइक डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अनवांटेड एंड प्लीजेंट साउंड प्रेजेंट इन आवर सब्जेक्ट. लाउड स्पीकर, campaigning, marriages, in other religious functions आप देखते हैं, barking of dogs, cracker busting, ये सब क्या आपके neighborhood में. Now harmful effects. What are the harmful effects of noise pollution? देखो साउंड जो 90 डेसिबल से ऊपर होगी वो आपकी क्या है? नॉइज है. So noise pollution increases various tension and turns create problem. भाई लोगों को इरिटेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंजाइटी हो जाती है, राइट? बीपी हाई हो जाता है. Lack of concentration disturbs sleep and causes mental tension. Harsh and loud noises can cause partial or permanent hearing loss. Many other problems also occur, like noise pollution causes problem for students. It becomes difficult to study in such an environment. Old and ailing people have problem due to noise pollution. So आपको मैं approximate level बताती हूँ. Whispering का है 25, conversation का 65, light vehicle का 70, heavy vehicle का 105, और cloud music का 110, और jet aeroplane का 130 and above. Now what can we do to control noise pollution? Here some things are given, some reasons are given, and some important measures are given to control noise pollution. All vehicles should be fitted with soft horns and silencer. Machine should be designed in such a way कि वो less noise create करे. ठीक है, आपको उसको proper time पे lubrication देना है. Factories and industrial units should be allowed to work in residential area. आपको religious places और religious functions पे loudspeaker को ban करना चाहिए. Right? Strict legal action should be taken against people जो इनको violate कर रहा है law को. And more trees should be planted. भाई रोड्स के साइड ना आपको ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करने चाहिए, क्योंकि वो नॉइज को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. नाउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. वी हैव स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, पर्क्यूशन और रीड इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग मतलब जिनके आपके जो वाइब्रेशन से मेटल वायर होते हैं ना, उनसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, लाइक वायलिन, गिटार, सितार. विंड जिनमें एयर कॉलम्स होते हैं, ठीक है, and you blow air and air present inside vibrate और वो sound produce करते हैं, like flute और सब. Percussion क्या होता है? लेदर होती है, इनकी मेम्ब्रेन होती है लेदर की, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, like we have drum, तबला, ढोलक. रीड वाले क्या होते हैं? ये कंटेन करते हैं मैजिकल रेट्स when air is blown through them, like harmonium, mouth organ, piano. ये सब क्या है? रीड इंस्ट्रूमेंट, right? These are the different instruments that I have told you about. Now the chapter has been completed. Hope you understood. Let's meet in the next class. Thank you.